Yes friends, good afternoon everyone. चलो कैन वी स्टार्ट. तो आज कोई कंसेप्ट नहीं है, आज बस हमें एग्जाम्पल सॉल्व करना है. ओके, तो रिलैक्स एंड जस्ट विल बी सॉल्विंग द एग्जाम्पल. भाई एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं व्हाट ऑल कंसेप्ट्स वी हैव सीन, सारे फॉर्मूलेज जो हमने देखे थे. तो फर्स्ट हमने देखा था ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से जो रिस्क अराइज होता है, that is called as operating risk, right? Now because of this operating risk, slight change in sales will result in higher change in operating profit, that is EBIT. Now this relation was been measured by operating leverage, right? So what was the formula for calculation of operating leverage? Percentage change in EBIT, that is operating profit divided by percentage change in sales. And second formula, contribution upon EBIT. Now by using this formula, supposing operating leverage हमने calculate किया है 3, it signifies कि अगर आपका sales given level से 1% change हो रहा है तो EBIT will be changing by 3%, either on higher side or lower side, right? Then second formula we had seen was operating break-even point. Now this is calculated as operating fixed cost divided by contribution per unit. Logically याद रखो, आपको fixed cost recover करना है. अब fixed cost recover कहां से करेंगे? Contribution per unit. तो कितने number of units sell करना है so as to recover your fixed cost. तो ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करते रहे, हमेशा याद रखिए न्यूमरेटर में फिक्स्ड कॉस्ट ही होगा. ओके, तो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दिस विल बी गेटिंग सेल्स इन यूनिट्स एट विच माय ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल बी 0, राइट? एंड इफ आई कैलकुलेट एज ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट divided by PV ratio, then I'll be getting sales at which EBIT is 0 in rupees, right? So these were the two important formulas जो हमने देखे थे in case of operating leverage. Then second part हमने देखा था financial leverage. अब second part में हमने देखा था कि अगर आपके capital structure में debt content है और preference share capital है, तो debt पे या preference share capital पे there will be a fixed financial cost involved. Is it right? We call it as financial fixed cost, right? So because of this financial fixed cost, the risk what is arising is called as financial risk, right? Now because of this financial risk, slight change in EBIT will result higher change in EPS, right? So here financial leverage calculate करने का formula क्या था? Percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT, or second formula EBIT divided by EBT. Now this formula you will be using only when there is a debt content into capital structure, preference share capital नहीं है, right? अगर preference share capital हो तो EBIT divided by EBIT minus interest minus preference dividend अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट, राइट? लॉजिकली ये डिवाइड क्यों करना है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. प्रेफरेंस डिविडेंड आफ्टर टैक्स कैश फ्लो है तो हमें कन्वर्ट करना है बिफोर टैक्स में, सो वी आर डिवाइडिंग बाय 1 माइनस टैक्स रेट, राइट? देन फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, यहां पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं लेवल ऑफ EBIT एट विच माय EPS विल बी इक्वल टू 0, राइट? सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? यहां पे अपना ऑब्जेक्टिव क्या होगा? उतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको अर्न करना है so as to cover your financial fixed cost. Now there are only two financial fixed costs, interest plus preference dividend. But then क्योंकि preference dividend after tax cash flow will be dividing by 1 minus tax rate. So this was the formula for financial break-even point, right? And financial break-even point से जो financial leverage से जो आप calculate करोगे, supposing you have calculated 3, so it signifies 1% change in EBIT will result in 3% change in EPS, right? And last leverage which we have seen was combined effect of it. So combined leverage was calculated as operating leverage into financial leverage. Operating risk and financial risk का combined impact, so that if combined leverage is supposing 6, तो इसका impact क्या था?
सेल्स अगर 1% से चेंज हो रहा है तो ईपीएस 6% से चेंज होगा फ्रॉम द गिवन लेवल, राइट। सो कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? प्रिंसिपल याद रखिए, न्यूमरेटर में मुझे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कंसीडर करना है, सो इट विल बी ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट प्लस फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड को 1 माइनस टैक्स रेट कंसीडर करना है क्योंकि ये दोनों कैश फ्लोज बिफोर टैक्स कैश फ्लोज है। एंड ये जो मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट है, that much I have to earn contribution per unit, so divided by contribution per unit, I'll be getting number of units to be sold so that my EPS will be equal to 0, and instead of contribution अगर मैं PV ratio से divide करूँ, I'll be getting number of units number of sales or amount in rupees. Is it right? I guess यहाँ तक के सारे formulas हमने discuss करे हुए थे, right? And we had written also ना in previous lecture. So now we can start with the examples. So read first example. इसमें से ये first part. अब इतने simple questions आपके एग्जाम में कभी नहीं आएंगे, ये just to start with है, okay? Find the operating leverage from the following. सेल्स 50,000, वेरिएबल कॉस्ट 60,000 एंड फिक्स्ड कॉस्ट 12,000। कितना आ रहा है? 2.5, राइट। चलिए क्विकली विल राइट डाउन। कैन वी राइट डाउन? तो नोट्स में हेडिंग लिखिए प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, क्लास नोट्स। Once you complete with all the examples of class notes, हमें past exam questions, RTP and MTP questions complete करना, and then at last we'll be solving study module questions. Okay? चलिए first in it first part heading लिखेंगे calculation of operating leverage as a presentation. As a presentation will show in table serial number, particulars and rupees. So serial number A, sales which has been given, कितना दिया है? 50,000 minus variable cost. Variable cost is been given 60%, so it will be 30,000. Contribution 20,000 less fixed cost 12,000, so I'll be getting EBIT 8,000. and here I can write operating leverage is equal to contribution upon EBIT. That is 20,000 divided by 8,000. So 2.5. This example is just to start with. इतने simple examples obviously आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। सी इंटर लेवल पे इतने सिंपल क्वेश्चन थोड़ी ना आएंगे। आपको भी लगना चाहिए कि सी इंटर में कुछ है, ठीक है ना? इंस्टीट्यूट को लगता है ना, लेकिन कि बच्चों का स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए, ठीक है ना? डन। Write down fast. Today we are supposed to complete only with 7 to 8 examples and एक concept discuss करना at last. Okay. चलिए second part. Done ना? Not done. Write down fast.
What man? चलो इसमें से सेकंड पार्ट सुदीप सेकंड पार्ट यू हैव टू फाइंड फाइनेंशियल लेवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा नेटवर्थ दिया है डेट इक्विटी रेशियो दिया हुआ है इंटरेस्ट रेट 12% और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज बीन गिवन 20 lakhs रफ में कैलकुलेट करके बता सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज EBIT फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या है वैसे EBIT डिवाइडेड बाय EBT तो EBIT दिया हुआ है EBT मुझे कैलकुलेट करना है कितना आ रहा है 1.8 समथिंग इट इज करेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्क क्या होता है नेट एसेट्स ओके सो नेट एसेट मींस एसेट माइनस liabilities so can I say net worth means equity shareholders fund जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा रिजर्व एंड सरप्लस भी आएगा और ये आपकी बैलेंस शीट यहां पे टोटल एसेट्स या फिक्स एसेट्स करंट एसेट्स यर इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड वी राइट एंड देन आफ्टर दिस ऑल लाइबिलिटीज तो टोटल ऑफ एसेट में से मैंने आउटसाइडर्स लाइबिलिटी लेस करा तो आई विल बी गेटिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड दैट इटसेल्फ इज अ नेटवर्थ तो यहां पे इक्विटी के फंड्स है 25 lakhs एंड डेट इक्विटी रेशियो दिया है 3:1 मतलब अगर 1 रुपए हमने इक्विटी शेयर से प्रोक्योर किया है तो 3 रुपए डेट है ओके तो अगर इक्विटी 25 lakhs है तो डेट कितना होगा 75 lakhs तो 75 lakhs पे 12% इंटरेस्ट होगा तो EBIT माइनस इंटरेस्ट आई विल बी गेटिंग EBT सो आई विल बी एबल टू कैलकुलेट फाइनेंशियल लेवरेज राइट तो यहां पे द थिंग वाज कि डायरेक्टली आपको इक्विटी या इंटरेस्ट अमाउंट दिया नहीं था तो डेट कैलकुलेट करने के लिए पहले नेटवर्थ दिया था एंड डेट इक्विटी रेशियो दिया हुआ था ओके सो विल राइट डाउन सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट एग्जांपल हेडिंग लिखिए कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज अगेन सीरियल नंबर particulars rupees serial number A operating profit that is EBIT 20 कितना दिया 20 lakhs less interest now here we'll directly write 75 lakhs into 12% and 75 lakhs कैसा है इसके लिए वर्किंग नोट 1 तो 75 lakhs इंटू 12% कितना आएगा 9 lakhs so EBT 11 lakhs so फाइनेंशियल लेवरेज कोई शॉर्टकट यूज नहीं करेंगे पूरा लिखेंगे फाइनेंशियल लेवरेज हाँ EBIT शॉर्टकट यूज कर सकते हो आप EBIT upon EBT. So 20 lakhs divided by 11 lakhs. 1.8. And इसके नीचे वर्किंग नोट 1 डेट नेट वर्थ दिया हुआ है 25 lakhs एंड सेकेंड डेट स्लैश इक्विटी 3/1 therefore debt equity into 3 that is 75 lakhs
एंड जस्ट आपके रेफरेंस के लिए नेटवर्थ यू कैन सिंपली राइट इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, which is calculated as total of asset minus outsiders liability. So this was very simple example to start with. Can we proceed with the actual examples? Chalo. Now read. Completed na everyone? Not yet complete. Okay, likhe. Done? Chalo, can we proceed? Read 8th question. बस ये छोटा सा क्वेश्चन. Is it visible? Firm has sales of 10 lakhs, variable cost 7 lakhs, fixed cost 2 lakhs, debt 5 lakhs जिस पे interest है 10%. Now what is operating leverage, financial leverage and combined leverage? This is the first question. This is very simple and इस तरह के questions exam में आते हैं. Okay, तो first part जो होगा operating leverage, financial leverage and combined leverage, merely application of formula होगा. Okay, second part is concept oriented. If the firm wants to double its EBIT, how much rise in sales would be needed on percentage basis? चलिए second part बाद में देखते हैं. पहले operating, financial and combined leverage calculate कर सकते हैं, right? So just read again. As per formula जो required है, everything is been given in straightforward manner. पहले अपना नॉर्मल स्टेटमेंट ड्रॉ करना है. इफ यू रिमेंबर हमने शुरुआत में फॉर्मेट ड्रॉ करा था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन में से क्या लेस करेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट. यू विल बी गेटिंग ईबीआईटी. ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट विल बी गेटिंग ईबीटी. यहां तक इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज. हाँ, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो तो माइनस इंटरेस्ट करना होगा ईएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड. यू विल बी गेटिंग अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट? चलो, तो विल ड्रॉ दैट फॉर्मेट फर्स्ट ऑफ ऑल. एग्जाम्पल नंबर 8. हेडिंग लिखिए कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड combined leverage. Serial number, particulars rupees. फॉर्मेट आपका फिक्स है. सेल्स कितना दिया है? सेल्स 10 lakhs माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है? 7 lakhs. So we'll be getting contribution 3 lakhs. इसमें से लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट जो दिया है 2 lakhs. तो लेस फिक्स्ड कॉस्ट 2 lakhs. So I'll be getting EBIT 1 lakh. इसमें से लेस इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट के लिए आपको दिया है डेट अमाउंट 5 लाख है जिसपे हमें 10% इंटरेस्ट पे करना है. तो 5 lakhs इंटू 10% 50,000. So I'll be getting EBT 50,000. And based on the reading कहीं पे भी preference share capital दिया नहीं है, right? So can I say this much information is sufficient to calculate all the 3 leverages?
इसी के नीचे कंटिन्यू करते हम। ऑपरेटिंग लेवरेज, दिस इज कैलकुलेट, फॉर्मूला वहीं पे लिखना है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। So how much you are getting? 3 lakhs divided by 1 lakh. So operating leverage 3. Financial leverage, EBIT divided by EBT. So 1 lakh divided by 50,000, that is 2. And combine the leverage. Operating leverage into financial leverage, that is 6. Done. Now this was first part. अच्छा, पहले यहाँ तक कंप्लीट कर लो। So here you can see this is merely application of formula, and इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। लेवरेज पे जो क्वेश्चन आएगा इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे, जिसमें से फर्स्ट पार्ट तो डेफिनेटली ये होगा, ऑपरेटिंग लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज। तो फर्स्ट पार्ट भले 1 मार्क या 2 मार्क के लिए क्यों ना हो, ये सिंपल रहेगा। ओके, कैन वी प्रोसीड? अब देखिए क्या दिया है सेकेंड पार्ट, अगर फर्म को ईबीआईटी डबल करना है देन सेल्स कितने परसेंटेज से इंक्रीज होना चाहिए? विल यू टेल मी दिस पार्ट? इफ your EBIT should be doubled, then what should be the percentage rise in the sales? ये आप ट्राई करके बताइए मुझे, how much will be the percentage rise? EBIT डबल करना है आपको। I have already told you financial management is best understood when you try it independently. अगर हम यहाँ पे 100 क्वेश्चंस ले आए एंड देन 101st क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो कोई गारंटी नहीं होगी इमीडिएटली आंसर आएगा। इफ ऑल क्वेश्चंस आई डिक्टेट 50%, वन आंसर होगा 50%। एनी अदर आंसर? चेक करके देखिए, अगर सेल्स 50% से राइज हो दैट इज 20 lakhs, देन वेरिएबल कॉस्ट भी 50% से राइज होगा 14 lakhs, तो कंट्रीब्यूशन 6 lakhs, फिक्स्ड कॉस्ट तो 2 lakhs एज इट इज रहेगा, EBIT 4 lakhs। तो अच्छा 50% राइज का ना, 100% नहीं, ठीक है। 15 lakhs, तो ये कितना होगा 10,50,000, तो इट विल बी 4,50,000, तो दिस इज 2,50,000। क्या EBIT डबल हो रहा है? नहीं हो रहा, डबल से ज्यादा हो रहा है, तो 50% राइज इन सेल्स इज नॉट द करेक्ट आंसर। EBIT डबल करना है तो सेल्स कितना परसेंटेज से इंक्रीज होना चाहिए? कितना? हैव यू ऑल अंडरस्टूड द क्वेश्चन नाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल, EBIT जो एग्जिस्टिंग लेवल पे 1 लाख है वो डबल होना चाहिए, मतलब कितना होना चाहिए? 2 लाख होना चाहिए, राइट? तो परसेंटेज राइज इन सेल्स 100%, EBIT 100% राइज हो रहा है, लेकिन सेल्स कितना परसेंटेज से राइज हो रहा है? कितना? समवन से 30%, एग्जैक्टली 30% भी नहीं आएगा। चेक करके देखो, एग्जैक्टली 30% अगर आपका सेल्स राइज हो रहा है 13 lakhs, ये 9,10,000 होगा, देन ये कितना होगा 3,90,000, तो 1,90,000 हो रहा है, डबल नहीं हो रहा, डबल चाहिए मुझे 2 लाख। 33.33 किसने कहा? 33.33 इज करेक्ट। चेक करके देखो, 13,33,333, तो 7 lakhs प्लस 33% कितना आएगा? ये 9,33,333, तो हियर 4 lakhs माइनस 2 lakhs फिक्स्ड कॉस्ट, EBIT 2 lakhs आ रहा है। क्या EBIT डबल हो रहा है?
यस, तो यहाँ पे परसेंटेज राइज 3,33,000 डिवाइडेड बाय 10 lakhs इंटू 100, दैट इज 33.33%। अगर मेरा सेल्स 33.33% से राइज हो रहा है तो मेरा EBIT डबल हो रहा है। डबल मतलब क्या? 100% राइज, बराबर ना? डबल मीन्स 100% ग्रोथ होना चाहिए, राइट? लेकिन इस मैनर में मुझे कैलकुलेट ही नहीं करना था। पहले बताइए, सेल्स का इंपैक्ट ऑन EBIT कौन सा लेवरेज मेजर करता है? ऑपरेटिंग लेवरेज। यहां पे ऑपरेटिंग लेवरेज कितना था? 3, राइट? इसका इंप्लीकेशन क्या है कि अगर मेरा सेल्स 1% से चेंज हो तो EBIT 3% से चेंज होगा, राइट? एंड मेरा EBIT आपको दिया है, EBIT क्या होना चाहिए? डबल होना चाहिए। अगर EBIT डबल होना चाहिए तो कितना परसेंटेज ग्रोथ? 100%। तो व्हाट शुड बी द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द सेल्स? 100 into 1 डिवाइडेड बाय 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 33.33%। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा था, वो रिलेशन जो था सेल्स का EBIT का EBT, वो मैंने हाईलाइट करने के लिए भी कहा था। एंड उस टाइम भी बताया था मैंने कि उसके बेसिस पे रिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो इसीलिए आपको रिलेशन याद रखना है। EBIT में चेंज दिया हुआ है, करस्पॉन्डिंग सेल्स में कितना चेंज होगा ये पूछा है। तो रिलेशन सेल्स टू EBIT ऑपरेटिंग लेवरेज आपको यूज करना है। Have you understood? And once you get this answer, you can cross check by this method. 33.33% अगर ग्रोथ हो तो सेल्स अगर इतना हो तो चेक करके देखेंगे EBIT कितना हो रहा है। 2 lakhs आ रहा है, then is it getting doubled? Yes. Then what you are calculated by applying operating leverage is correct. Have you all understood? Write down second part. लिखिए calculation of percentage change in sales required to double EBIT. That is 100% rise in EBIT. Serial number, particular, right hand side, amount. Serial number A, percentage rise in EBIT 100%. Second, that is B, operating leverage 3. Therefore, percentage rise in sales required A upon B 33.33%. ये जस्ट प्रेजेंटेशन का पार्ट हुआ। एंड आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे लिखिए, ऑपरेटिंग लेवरेज इज 3, सो सेल्स 1%, देन EBIT चेंजेस बाय 3%, यहाँ पे EBIT चेंजेस बाय 100%. सो व्हाट इज प्रोपोर्शनेट चेंज इन सेल्स? सो क्रॉस मल्टीप्लाई 100 into 1 upon 3, that is 33.33. ये जो हमने ब्रैकेट में लिखा है that is just for your understanding. As a presentation, we have presented in tabulated manner. Okay. Once you have completed, just go through the calculation and see whether you are understood. Think on it. EBIT एंड सेल्स का इंपैक्ट, कौन सा लेवरेज यूज करना है याद रखना है। ओके, तो अगेन सेल्स एंड EBIT का रिलेशन ऑपरेटिंग लेवरेज, EBIT एंड EBT या EPS का रिलेशन फाइनेंशियल लेवरेज, एंड सेल्स का इंपैक्ट EPS पे कंबाइंड लेवरेज। ये रिलेशन याद रखना, एंड इसीलिए हमने समरी में हाईलाइट किया था। अगर नहीं करा तो हाईलाइट करके रखिए। एग्जाम्पल में कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे
एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला भी आएगा एंड दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट बेस्ड भी आएगा. ओके, कैन वी ऑल प्रोसीड? कैन वी प्रोसीड? एवरीवन हैज कंप्लीटेड? चलो एक और क्वेश्चन, 9th. First I'll read for you. XYZ Limited has estimated that for a new product, break-even point is 2000 units. If the item is sold at 14 per unit and cost accounting department has currently identified variable cost as 9 per unit, calculate degree of operating leverage for sales of 2500 units, 3000 units. ये first part. व्हाट डू इन्फर वो बाद में देखेंगे, पहले बस इतना कैलकुलेट करना है. रफ में आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे कि ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होना चाहिए एट 2500 यूनिट्स. बस एक पार्ट का कैलकुलेट करके बताइए. ये ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट है. रफ में कैलकुलेट करो एंड टेल. हर एग्जाम्पल में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू विल ट्राई इंडिपेंडेंटली. ऑपरेटिंग लेवरेज 1 आ रहा है. ओके, आई गॉट वन आंसर 1 विच इज नॉट करेक्ट. आराम से कैलकुलेट करो. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू इंडिपेंडेंटली सॉल्व. भले आंसर आए या ना आए, ट्रायल एंड एरर पार्ट जो है वो होना चाहिए आपका. Answer 5, absolutely correct. If you are getting 5 as an answer, then it is correct. Should we discuss? अच्छा, go with the basic. हमें कैलकुलेट क्या करना है? ऑपरेटिंग लेवरेज. अब ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. अब आपको क्या क्या दिया है? सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, देन वेरिएबल कॉस्ट दिया है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं. नंबर ऑफ यूनिट्स दिया हुआ है, तो आई कैन कैलकुलेट टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट? सो दिस आई कैन कैलकुलेट. अब EBIT कैलकुलेट करने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट दिया नहीं है, तो whenever one information is not been given, some other information will be given. अदर इंफॉर्मेशन दिया आपको ब्रेक इवन पॉइंट. अब ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. नाउ दिस वी कैन कैलकुलेट. दिस इज बीन गिवन, तो आई कैन कैलकुलेट फिक्स्ड कॉस्ट. बाय यूजिंग दिस आई कैन कैलकुलेट EBIT. इज इट राइट? तो यहां पे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन वाज नॉट बीन गिवन, सो फर्स्ट वी वर सपोज टू यूज ब्रेक इवन पॉइंट फॉर्मूला टू कैलकुलेट फिक्स्ड कॉस्ट. ये फिक्स्ड कॉस्ट यूज करके हम EBIT कैलकुलेट करेंगे. वंस वी गेट EBIT, देन जस्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला. कैन वी सॉल्व? तो आपको बेस जो क्वेश्चन पूछा है पहले वो चेक करना है, क्या ऑल इंफॉर्मेशन डायरेक्टली दिया हुआ है? अगर डायरेक्टली दिया है तो जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला. इफ डायरेक्टली इज नॉट बीन गिवन, यू हैव टू सर्च सम अदर इंफॉर्मेशन which is been given to calculate this part. Okay, चलिए write down example number 9. इसमें फर्स्ट वर्किंग लिखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट. ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन. अब देखिए जो ब्रेक इवन पॉइंट जो दिया हुआ है वो रुपीज में दिया है या नंबर्स में दिया है? यूनिट्स में दिया हुआ है, राइट? मतलब डिवाइड क्या करना होगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. अगर रुपीज में दिया रहता वी वुड हैव डिवाइडेड बाय PV रेशियो. तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट.
2000 is equal to fixed cost divided by 14, selling price 14 and variable cost 9. So fixed cost is equal to 2000 into 5, that is 10,000. This was first working. Now once you get this, then merely application of formula. Second working, calculation of operating leverage. हमें दो सेल्स वॉल्यूम पे कैलकुलेट करना था. So we'll be writing serial number, particulars, right hand side, sales volume 2500 units and 3000 units. Serial number A, directly I can write from contribution only. Contribution at the rate ₹5 per unit. यहाँ पे वर्किंग दिखाएंगे 2500 into 5, that is 12,500, and 3000 into 5, that is 15,000, minus fixed cost, working note 1, 10,000, 10,000, क्योंकि लेस करना है इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है. So I'll be getting EBIT 2500 and 5000. Operating leverage is contribution upon EBIT, that is serial number A upon C I can write. So 5 and 3. Such questions may be asked in your exam for 4 or 5 marks. Very simple example. You are doing it for the first time. जैसे जैसे हम example solve करेंगे, later on you will understand leverage एक बहुत सिंपल टॉपिक है. इसमें एग्जाम में जो भी मार्क्स वेटेज रहेगा 5 या 6 या 7, आपने एक मार्क भी लूज नहीं करना इस टॉपिक में से. ओके, आपके अगर एफएम में मार्क्स लूज होंगे तो आई कैन अश्योर सिर्फ कैपिटल बजटिंग में हो सकते हैं, बाकी पूरा एफएम बहुत सिंपल है. ओके, वो भी लूज नहीं करना है, बट स्टिल वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है, बट ये बाकी के सारे टॉपिक्स फॉर्मूला बेस्ड है. वंस यू अंडरस्टैंड कंसेप्ट द कैलकुलेशन विल बी फार मोर इजियर. हाँ, सम बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, एंड आई अज्यूम क्या यू आर वेरी गुड इन मैथ्स. चलिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पे. व्हाट डू यू इन्फर, इन्फरेंस मतलब क्या, कंक्लूजन, फ्रॉम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एट अ सेल्स वॉल्यूम ऑफ 2500 and 3000 यूनिट्स एंड देयर डिफरेंस इफ एनी. तो 2500 पे ऑपरेटिंग लेवरेज कितना था 5 and 3000 पे 3. तो कैन यू से ऑपरेटिंग लेवरेज इज रिड्यूसिंग. इसका लॉजिक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जैसे मेरा सेल्स इंक्रीज होगा ऑपरेटिंग रिस्क रिड्यूसेस, एंड एज ऑपरेटिंग रिस्क रिड्यूसेस ऑपरेटिंग लेवरेज विल फॉल. बस यही लिखना है हमें एज अ कमेंट. ओके, सो राइट डाउन बिलो दिस. इन्फरेंस स्लैश नोट. First point, at sales volume of 2500 units, the operating leverage is 5. हमें पूरा इन्फरेंस देना है, मतलब ये ऑपरेटिंग लेवरेज 5 का सिग्निफिकेंस क्या है वो भी देना है. मतलब एग्जिस्टिंग लेवल से अगर मेरा सेल्स 1% से चेंज हो रहा है तो EBIT 5% से चेंज होगा, ये भी एक्सप्लेन करना है. ओके, आप क्वेश्चन में देखिए, पहले इन्फरेंस पूछा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का,
एंड देन पूछा है कि सेल्स वॉल्यूम 2500 एंड 3000 पे जो डिफरेंस है उसका रीजन. ओके, सो राइट डाउन. At sales volume of 2500 units, operating leverage is 5. It means if sales changes from this level by 1%, then operating profit bracket में that is EBIT will change by 5%. Second note, at sales volume of 3000 units, operating leverage is 3. It means if sales changes by 1% from this level, then EBIT changes by 3%. Done. So we have written the inference of operating leverage at both the levels, and now we have to write a note why there is a difference. 5 से 3 क्यों हुआ? So third point लिखिए, as sales increases from 2500 units to 3000 units, operating leverage 2500 to 3000 units, operating leverage falls from 5 to 3. This is because as sales rises over and above break-even point, margin of safety sales increases, and thus operating risk reduces. Therefore, operating leverage falls. इसी में एक और पॉइंट लिखिए, margin of safety sales and operating leverage are. बताइए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स एंड ऑपरेटिंग लेवरेज में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा या इनवर्स? इनवर्स. जैसे जैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंक्रीज हो रहा है वैसे ऑपरेटिंग लेवरेज कम होगा. सो आर इनवर्सली रिलेटेड. फुल स्टॉप. इतना ही लिखना है आपको. ओके. एनी डिफिकल्टी इन दिस एग्जाम्पल? इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में. ओके.
कैन वी प्रोसीड? ओके, राइट। डन। चलो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7th, now sometimes degree of operating leverage is written as 5-1. it implies it is 5 only. 5-1 मतलब क्या? सेल्स अगर 1% से चेंज हो रहा है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज चेंजिंग बाय 5%. ओके, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग जस्ट 5 they have written 5-1, 6-1, 2-1, फाइनेंशियल लेवरेज 3-1, 4-1 एंड 2-1. तो यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है? 5, 6, 2, फाइनेंशियल लेवरेज 3, 4, 1, 3, 4, 2 एंड सो ऑन. ओके, ये क्या हुआ? क्या स्नैक्स खाने का टाइम हो गया क्या? अच्छा रीड करो, चलो ब्रेक. We do have ample of time. Still we are having 45 minutes. चलिए क्या दिया है देखिए, ये एग्जाम का क्वेश्चन है. वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स दिया हुआ है 66 2/3. तो कंट्रीब्यूशन एज परसेंटेज ऑफ सेल्स कितना होगा यहां पे? 33 1/3, बराबर ना. वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन आर रिलेटेड ओनली. अगर मेरा सेल्स है 100 तो वेरिएबल कॉस्ट इज 66 2/3, तो कंट्रीब्यूशन विल बी 33 1/3. सिमिलरली यहां पे 75 तो कंट्रीब्यूशन 25 होगा, एंड यहां पे 50 है तो रिमेनिंग 50 विल बी कंट्रीब्यूशन, राइट. इंटरेस्ट दिया हमें 200, 300 एंड 1000. ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज दिया है 5, 6, 2, 3, 4, 2 रिस्पेक्टिवली, एंड इनकम टैक्स रेट 35%, 35%, 35% दिया हुआ है. एंड हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है फॉर ऑल दिस 3 कंपनीज. मतलब वही सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट EBIT माइनस इंटरेस्ट EBT, देन टैक्स भी दिया हुआ है तो माइनस टैक्स EAT. नंबर ऑफ शेयर्स दिया नहीं, अदरवाइज वी वुड हैव रिटन टिल EPS. तो एक काम करेंगे, पहले इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे. इनकम स्टेटमेंट में जितना इंफॉर्मेशन डायरेक्टली दिया है वो लिखेंगे, रिमेनिंग विल बी सिंपली फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, तो यहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स ही करना है बस. चलो राइट डाउन एग्जाम्पल नंबर 7. हेडिंग लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट. सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स एंड 3 कंपनी यहां पे, A लिमिटेड, B लिमिटेड एंड C लिमिटेड. इनकम स्टेटमेंट A सेल्स. क्या सेल्स दिया है क्वेश्चन में? वेरिएबल का कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स दिया, लेकिन सेल्स ही पता नहीं. तो जब तक सेल्स नहीं मिलेगा तब तक मैं वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं लिख सकता. तो विल जस्ट कीप इट ब्लैंक, माइनस वेरिएबल कॉस्ट. Now this also will be blank. I will be getting contribution. अब ये भी लिख नहीं सकते. माइनस फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट भी दिया नहीं ना क्वेश्चन में, नहीं दिया. तो EBIT, इसमें से इंटरेस्ट लेस होगा. इंटरेस्ट दिया है क्वेश्चन में, ये देखिए 200, 300 एंड 1000. सो दिस आई कैन राइट 200, 300 एंड 1000. So what I'll be getting is EBT less tax at the rate 35%. जब तक EBT पता नहीं तब तक मैं टैक्स भी कैलकुलेट नहीं कर सकता. So EAT, नंबर ऑफ शेयर्स दिया नहीं है, सो वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट टिल EAT ओनली. बस यही फॉर्मेट है, यही इनकम स्टेटमेंट है. रिमेनिंग बस आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है. बस इतना लिख लो पहले. अब कैलकुलेट करने के लिए लेवरेज दिया हुआ है आपको. ओके, राइट डाउन, यहां तक लिख लो पहले.
So only interest has been given, that figure we have written. Write down properly, your answers should be written in proper manner. ठीक है, रिवीजन के टाइम आपको समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा है आपने. रिटर्न. चलिए अब बताइए कौन सा लेवरेज हम यूज करें. ऑपरेटिंग लेवरेज यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, देखिए कर सकते हैं. ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी. क्या कंट्रीब्यूशन दिया है? नहीं. क्या ईबीआईटी दिया है? नहीं. तो सिर्फ ऑपरेटिंग लेवरेज लेकर के क्या करें? तो ऑपरेटिंग लेवरेज आई कैन नॉट यूज. फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी. तो फाइनेंशियल लेवरेज दिया है. क्या ईबीआईटी दिया है? नहीं. क्या ईबीटी दिया है? नहीं. लेकिन ईबीटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कैन आई राइट ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटीज. अब इंटरेस्ट दिया है, फाइनेंशियल लेवरेज दिया है, तो ओनली मिसिंग इज ईबीआईटी. सो आई कैन कैलकुलेट ईबीआईटी एंड वंस आई गेट ईबीआईटी, यहां पे ये एक बार मिले तो ईबीटी मिलेगा, टैक्स रेट आई कैन कैलकुलेट, ईएटी मिलेगा. मींस रिमेनिंग ऑल द पार्ट आई कैन कैलकुलेट. हैव यू अंडरस्टूड? सो फर्स्ट आई विल बी मेकिंग यूज ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज. सो वर्किंग नोट 1. क्योंकि 3 कंपनीज है तो हम कॉलमनर फॉर्म में ही प्रेजेंट करते हैं. वर्किंग नोट 1, वी कैन राइट डाउन हेडिंग ईबीआईटी, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड. फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला ईबीआईटी. वैसे डिवीजन में हम ईबीटी लिखते हैं, लेकिन यहां पे लिखेंगे ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट. तो टाइम बिंग आई विल अज्यूम ईबीआईटी एज एक्स. कंपनी ए के लिए फाइनेंशियल लेवरेज कितना दिया है? 3. तो हियर आई विल शो वर्किंग 3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 200. अब आपका बेसिक मैथमेटिक्स, डिनोमिनेटर लेफ्ट में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा. सो 3x माइनस 600 इज इक्वल टू एक्स. एक्स लेफ्ट में जाएगा तो माइनस होगा. सो 2x इज इक्वल टू 600. x की वैल्यू 300. दैट इज EBIT इज इक्वल टू 300. अब मैथ्स रिक्वायर्ड है, मतलब आपका सीए फाउंडेशन वाला मैथ्स रिक्वायर्ड नहीं है, बेसिक स्कूल वाला मैथ्स रिक्वायर्ड है. वो तो पहले नहीं आता. फाउंडेशन का कुछ तो फिर भी अभी रिसेंटली क्या है तो याद आता होगा, वो भी नहीं आता. वेरी गुड. अब क्या है, कॉस्टिंग में भी नंबर से रिलेटेड है, एफएम में भी नंबर से रिलेटेड है. एफएम तो आधा आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे डिपेंडेंट है. ओके, अभी तक तो रेफरेंस नहीं है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, but don't worry, whenever the reference will be coming, that time we'll revise time value of money, then only we'll proceed. So similarly calculate for B limited now. B limited का interest है 300 and financial leverage is 4. बताइए कितना आएगा? 4 is equal to x upon x minus 300. And last C limited, interest 1000, financial leverage is 2. So 2 is equal to x upon x minus 1000. So 2x minus 2000 is equal to x. So x is equal to 2000. I hope you understood this calculation. इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो डोंट आस्क मी. बस काय ऑनलाइन. हा देन आता काय मॅथ्स शिकू काय आता परत इक्वेशन सॉल्व करणं.
काय चाललं तुमचं? अच्छा ये कंप्लीट करा आपने. तुम्ही काय इथं बसून कमेंट करत बसला. ये RX 100 कौन है? रेंदो अभी. I belong to very poor family. Any discount please? कमेंट करता है, I also belong to very poor family. अच्छा चलो लिखो लिखो, ये जल्दी लिखो. 300, 400 and 1000. Sorry, 2000. प्रॉब्लम छोड़ के क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? तो यहाँ पे EBT 100, 100 and 1000. It will be 65, 65, 650. I guess we should be starting with more difficult examples. आपका क्या हो रहा है? पहले ही कंप्लीट करके बैठ रहे हो आप. Completed till here. Now what to calculate? ऑपरेटिंग लेवरेज से कैलकुलेट कर सकते हैं. अब देखिए ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी. ऑपरेटिंग लेवरेज गिवन, ईबीआईटी हमने कैलकुलेट किया है, सो वी कैन कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन. एंड वंस वी कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन, सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट आल्सो वी कैन कैलकुलेट. So all the remaining will calculate in one working only. ठीक है. So working note 2. Write down calculation of contribution, sales and variable cost. Serial number, particulars, A limited, B limited, C limited. First, we have to calculate contribution. How we can calculate contribution? Operating leverage is equal to contribution upon EBIT. तो show working. कंपनी A के लिए ऑपरेटिंग लेवरेज कितना दिया है? 5. तो 5 is equal to contribution we don't know, but EBIT हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 300. So contribution will be equal to 300 into 5. So this I can write as 1500. Then company B limited. B limited के लिए variable operating leverage है 6 and EBIT हमने कितना कैलकुलेट किया था? 400. So 6 is equal to contribution upon 400. Contribution is equal to 400 into 6. That is 2400. And company C operating leverage कितना है? 2. So 2 is equal to contribution upon EBIT कितना था? 2000. So contribution is equal to 2 into 2000, that is 4000. Written. Now we have been given variable cost as percentage of sales 66 2/3, then 75% and 50%. So remaining will be contribution as percentage of sales. So contribution as
percentage of sales. This I can write as 100 minus serial number B. So this will be 33 1/3%, 25% and 50%. अब जब कंट्रीब्यूशन का अमाउंट हमें पता है, परसेंटेज ऑफ सेल्स पता है, तो आई कैन कैलकुलेट सेल्स. दिस विल बी सीरियल नंबर ए अपॉन सी इंटू 100. परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे. तो 1500 डिवाइडेड बाय 33.33%, 4500, 2400 divided by 25%, 9600, and 4000 divided by 50%. This will be 8000. And once I got sales, I can also calculate variable cost. Either I can calculate sales, that is serial number D minus contribution, D minus A, or I can calculate sales D into variable cost ratio, that is B. दोनों का आंसर वैसे भी सेम ही होगा. तो 4500 minus 1500, variable cost 3000, 9600 minus contribution कितना था 2400, 7200 and 8000 minus contribution 4000. Just check whether you have understood each and every number what you have written. कोई भी कैलकुलेशन में अगर डिफिकल्टी हो तो डू प्लीज टेल मी, विल डिस्कस इट अगेन, बट मेक श्योर यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी नंबर. देखिए आपको क्या दिया था, वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स है 66 1/3. मतलब क्या, अगर सेल्स 100 हो तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा 66 2/3 बराबर. तो अगर ये 66 2/3 है तो कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. सो रिमेनिंग पार्ट वी हैव टेकन 33 1/3, राइट. अब आपको क्या दिया है, कंट्रीब्यूशन कितना था 1500. पहले तो अगर मेरा सेल्स 100 है तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, ये 33 1/3. तो कंट्रीब्यूशन एक्चुअल में रुपीज में कितना है 1500. दिस इज जस्ट एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, राइट. तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन अगर 1500 है तो हाउ मच दिस विल बी, क्रॉस मल्टीप्लाई 1500 डिवाइडेड बाय 33 1/3%. दिस इज व्हाट वी हैव रिटन इन अ कैलकुलेशन. सीरियल नंबर ए, दैट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन या सी, सी मींस परसेंटेज. तो ये तो कैलकुलेट किया हमने, कंट्रीब्यूशन अपॉन परसेंटेज. Have you understood this working sales calculation? Same applies for company B and C, right? And once I got sales, contribution हमने already calculate किया है, तो sales minus contribution I can calculate variable cost. और sales का percentage variable cost दिया हुआ है, तो अगर मैं 4500 का 66 2/3 calculate करूँ, still I'll be getting same answer. तो हमने दोनों working लिखा है, whichever you find simple you can use. Okay. Still, if any figure you are not understood, do tell. And if you understood, complete. अगर आप यहां पे नहीं पूछ रहे हो, at least after class, do ask if you are having any doubt relating to any of the calculation. I don't have any problem to discuss each and every calculation like 10 times, but make sure you understood each and every calculation. अपने पास ample time है, FM का syllabus proper time में complete होएगा. Okay? नहीं एक्स्ट्रा लेना होगा, एक्स्ट्रा लेना होगा. बट देन वैसे नॉर्मल टाइम 3 मंथ्स के आसपास, 3 मंथ्स के से कम ही लगता है. बट देन वी आर टारगेटिंग 2 मंथ्स एंड 10 to 15 डेज के अंदर कंप्लीट करना है. सो वी हैव टू टेक एक्स्ट्रा. बट एक्स्ट्रा कब लेंगे, जब आपका SM कंप्लीट होगा. SM विल बी कंप्लीटिंग वे बैक अर्लियर, तो इन 1.5 months SM कंप्लीट होगा. सो SM एंड FM then 3 hours होगा. एंड वंस वी गेट दैट टाइम, FM will be very fast completed. क्या है, अभी तो ठीक है ये सिंपल पार्ट चल रहा है, आगे जैसे कैपिटल बजटिंग आएगा एक लेक्चर में एक ही प्रॉब्लम होगा. ओके, दैट बिगर द क्वेश्चंस विल बी देन. ओके, सो ग्रेजुअली इट विल टेक टाइम, बट देन जैसे एक्स्ट्रा स्टार्ट होगा विल कंप्लीट. आता कैपिटल बजटिंग 6 to 7 मार्क्स. हाँ, यहां पे हम डिस्कस करते सॉल्व करेंगे ना. तो यर फर्स्ट आई विल बी आस्किंग यू टू ट्राई. एक लेक्चर में एक मतलब देयर विल बी सम क्वेश्चंस, इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे अब एग्जाम में.
अर्लियर एफएम के 10 मार्क्स के क्वेश्चन वेर बिन आस्क्ड, क्योंकि जब 60 मार्क्स का था एमसीक्यू नहीं था। अब तो 50 मार्क्स का एफएम है, उसमें से 15 मार्क्स एमसीक्यू है, तो 10 मार्क्स बिगर क्वेश्चन वोंट बी आस्क्ड, तो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। ओके, डन विद दिस, एनी इशू इन दिस? चलिए नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पे कमेंट भी करना था आपको, कमेंट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी। लेट्स राइट। अरे पहले ये लिखना है ना, अभी ये वर्किंग नोट कंप्लीट किया ना हमने, तो राइट डाउन इन मेन पार्ट सेल्स जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है 4500, देन कंपनी बी का कितना था 9600 एंड 8000, वेरिएबल कॉस्ट वी आर कैलकुलेटेड 3000, 7200 एंड यहाँ पे 4000, सो कंट्रीब्यूशन 1500, 2400 and 4000, then fixed cost will be balancing figure. अगर EBIT 300 होना चाहिए तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा 1200, 2400 में से फिक्स्ड कॉस्ट 2000 लेस करना होगा, so that EBIT will be 400 and यहाँ पे 2000 होना चाहिए। Done. So this was an income statement. Any issue in this? Okay. Completed? Now we are supposed to comment on the financial position and the structure of company. So write down. Comment. बताइए कौन सी कंपनी हाईएस्ट रिस्की कंपनी है? सबसे ज्यादा रिस्की कंपनी यहाँ पे कौन सी है? सी, श्योर? ऑपरेटिंग लेवरेज हाईएस्ट किसका है? बी का है ना, एंड फाइनेंशियल लेवरेज दैट इज आल्सो हाईएस्ट। आपको जस्ट अमाउंट वाइज टोटल चेक नहीं करना है क्योंकि सेल्स भी हाईयर है, राइट? सो यू कैन नॉट कंपेयर जस्ट अमाउंट, कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है, सो लेवरेज आपको कंपेयर करना है। सो यहाँ पे लेवरेज इज हाईएस्ट, सो बी लिमिटेड इज हाईएस्ट रिस्की कंपनी, ओके, एंड लीस्ट रिस्की कंपनी इज सी, and A we can say is having a moderate risk level. This is what we need to comment. Okay, don't just compare the amount of fixed cost because the capacity level will be different. बराबर, अगर हमने यहाँ पे से कोई छोटा सा प्रीमाइसेस लिया रहता तो fixed cost rent would have been 30,000 and now when the capacity is higher the fixed cost is 1 lakh. So I cannot just compare with the amount जब capacity different हो. Okay, so write down B Limited is most risky company. ऑब्वियसली बी लिमिटेड का सेल्स के कंपैरिजन में फिक्स्ड कॉस्ट हाइयर ही होगा कंपैरेटिवली। यहां पे देखिए 2400 के लिए 2000 है, यहां पे 4000 के लिए 2000 है, तो यू कैन सी जब मेरा कंट्रीब्यूशन है 2400 उसके अगेंस्ट मेरा फिक्स्ड कॉस्ट 2000 है, एंड दूसरी कंपनी देखिए सी 4000 जब प्रॉफिट है तो हाफ उसका फिक्स्ड कॉस्ट है, तो यहां पे कंपनी बी में कॉस्ट प्रॉफिट के कंपैरिजन में बहुत हाइयर है। सिमिलरली जब EBIT 300 है, मेरा इंटरेस्ट कितना है, सॉरी EBIT 400 जब है, इंटरेस्ट इज 300, सो व्हेन आई कंपेयर दिस टू तो दिस इज वेरी हाइयर। यहां पे 2000 के कंपैरिजन में 1000 इंटरेस्ट है, अगेन 50%, so as compared to the profit potential your fixed cost is very higher, therefore risk is higher. Okay, so write down B Limited is most risky company because its operating and financial leverage are higher as compared to other firms, as compared to other firms. Next, C Limited is least risky firm
because operating and financial leverage are lowest. A Limited has moderate risk level. Written? Completed? Any issue in this? Now read. Still to write? Read. हाँ लिखिए. If you have completed, read 13th and you are going to tell me the answer. Read करो 13th. And tell me the answer. Degree of total leverage, degree of financial leverage. So this is combined leverage and this is financial leverage. Combined leverage दिया है 3 and financial leverage दिया है 2. तो operating leverage कितना होगा? 1.5. All the three leverages are been given. Interest दिया है 60,000, preference share dividend दिया है 16,000. So first of all remember preference share capital है. तो अगर financial leverage calculate करना है तो इसका formula क्या use करेंगे? EBIT upon EBIT minus interest minus preference dividend divided by 1 minus tax rate. EBIT calculate करना है वो. Tax rate दिया हुआ है 60%. What are the amount of sales revenue and fixed operating cost? You are having 5 minutes to solve this exam. Try. Rough में try करो, fair में try करो. First of all, I am not expecting correct answer from you. I want कि आप खुद से कुछ तो try करो. Okay. So getting the correct answer is not important. Reaching till answer or doing something is important over here.
स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करो। कितना EBIT? नहीं, आई गेस 2 lakhs आना चाहिए EBIT। 2 lakhs is 2 lakhs ना? It is correct. This we can say first step. It is correct. You are on the right track. Sales 5 lakhs, exactly. Fixed cost 1 lakh, right? Calculate करो सभी। अगर आपने EBIT 2 lakhs कैलकुलेट किया है, then it is correct. You are on the right track. Just you have to proceed further. You have to go in the reverse manner. जब EBIT आया, ऑपरेटिंग लेवरेज आया, तो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार कंट्रीब्यूशन मिला तो हम सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कितना कंट्रीब्यूशन 3 lakhs. इट इज करेक्ट। देखिए कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट भी दिया हुआ है, दिया है ना, दिया है 2 lakhs, तो आप सेल्स कैलकुलेट कर सकते हो अभी 5 lakhs एग्जैक्टली। एंड वंस यू गेट सेल्स 5 lakhs, तो फिक्स कॉस्ट तो क्या है, जस्ट टाइम पास कैलकुलेशन। रीचिंग टिल दैट सेल्स वाज इंपॉर्टेंट पार्ट। शुड वी डिस्कस और यू आर सॉल्विंग? सॉल्व करो, सॉल्व करो। नहीं, हम करेंगे सॉल्व साइमल्टेनियसली, हम करेंगे। यू जस्ट कैलकुलेट इन द रफ। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर एवरीवन दोज हु आर कंप्लीटिंग। कैन वी डिस्कस नाउ? चलिए, नाउ डोंट राइट। पहले तो आपका फॉर्मेट याद रखना है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, या EBIT माइनस इंटरेस्ट EBT। अब आपको क्वेश्चन में ऑपरेटिंग लेवरेज दिया है, फाइनेंशियल लेवरेज दिया है, कंबाइंड लेवरेज दिया है। कंबाइंड लेवरेज डायरेक्टली दिया हुआ है 3, फाइनेंशियल लेवरेज दिया है 2, सो ऑपरेटिंग लेवरेज वी कैन कैलकुलेट 1.5, राइट। अब देखिए कौन सा इंफॉर्मेशन पहले यूज करना है, ये भी आपको सोचना होगा। नाउ इफ आई गो फॉर ऑपरेटिंग लेवरेज इज कैलकुलेट एज कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ना ही कंट्रीब्यूशन दिया है, ना ही EBIT दिया है, सो दिस आई कैनॉट यूज फॉर। फाइनेंशियल लेवरेज इज कैलकुलेटेड एज EBIT upon EBT, but EBT I can write as EBIT minus interest. Financial leverage दिया हुआ है। अब interest been given 60,000 is been given. Sorry, preference dividend is also been given. So minus preference dividend upon 1 minus tax rate. Then you can see financial leverage दिया हुआ है, interest दिया हुआ है, preference dividend दिया हुआ है. So based on this I can calculate EBIT. Is it right? So first working will be based on this. I'll be calculating EBIT. Now once I get EBIT, then I can use this formula. Operating leverage is equal to contribution upon EBIT. EBIT हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ऑपरेटिंग लेवरेज आपको दिया हुआ है, सो आई विल बी गेटिंग कंट्रीब्यूशन। अब एक बार कंट्रीब्यूशन मिला, वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, राइट, सो आई कैन कैलकुलेट द सेल्स। एंड वंस आई गेट सेल्स, कंट्रीब्यूशन पता है मुझे, EBIT मैंने कैलकुलेट किया है, तो ये बैलेंसिंग फिगर फिक्स्ड कॉस्ट होगा। इज इट राइट? सो माय वर्किंग विल बी फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ EBIT, सेकंड कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन, and then third I can calculate sales and fixed cost. Okay, तो ये जो थिंकिंग प्रोसेस है, जब आपको इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड मैनर में दिया रहेगा, you have to analyze कि what information is relevant at the initial stage, and then based on that you have to calculate the required things. Okay, and obviously ट्रायल एंड एरर से आएगा, आपको कोई आकर के बताएगा नहीं कि पहले फाइनेंशियल लेवरेज यूज करना है। आप ऑपरेटिंग लेवरेज चेक करके देखिए, दोनों इंफॉर्मेशन अगर ना अवेलेबल हो, then we have to switch for next information. Okay, चलिए, कैन वी कैलकुलेट? सो राइट डाउन एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें फर्स्ट वर्किंग,
इसमें फर्स्ट वर्किंग EBIT. So here we'll be writing the formula of financial leverage. Financial leverage is equal to EBIT upon EBIT minus interest minus preference dividend upon 1 minus tax rate. We are given interest 60,000. डायरेक्टली नंबर्स लिखा तो भी चलेगा, जस्ट आई एम राइटिंग कि क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. प्रेफरेंस डिविडेंड 16,000 एंड टैक्स रेट कितना दिया है 60%. वेरी गुड. एंड फाइनेंशियल लेवरेज इज ऑल्सो बीन गिवन 2. सो 2 इज इक्वल टू टाइमिंग EBIT को मैं x मान रहा हूँ, तो x माइनस 60,000 minus 16,000 divided by 1 minus 0.60. Simplified 2 is equal to x upon x minus, पहले 16,000 divided by 0.40, 1 minus 0.60 मतलब 0.40, so this is 40,000, so minus 60 minus 40, this will be 1 lakh. So this cross multiplication, so it will be 2x minus 2 lakhs is equal to x. So 2x minus x is equal to 2 lakhs. So x is equal to 2 lakhs. That is EBIT is equal to 2 lakhs. EBIT is equal to 2 lakhs. Written. This was the first working. Can we start second? Now second, जब EBIT दिया ऑपरेटिंग लेवरेज दिया हुआ है, so we can calculate contribution. So second heading working का लिख सकते हैं contribution. Operating leverage is equal to contribution upon EBIT. यहाँ पे राइट साइड जस्ट दिखाइए ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल टू टोटल लेवरेज अपॉन फाइनेंशियल लेवरेज, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया नहीं है, सो जस्ट शो वर्किंग. So 1.5 is equal to contribution upon 2 lakhs. Therefore contribution is equal to 3 lakhs. And third working I can write sales. I can write contribution is equal to sales minus variable cost. So minus variable cost लेफ्ट में जाएगा तो प्लस होगा, तो sales is equal to contribution plus variable cost. So contribution plus variable cost, contribution is 3 lakhs plus variable cost 2 lakhs. Sales 5 lakhs. Done. And last we are supposed to calculate fixed cost also. So write down fourth working fixed operating cost. So I can write EBIT as contribution minus fixed cost. Therefore, fixed cost is equal to contribution minus EBIT. So 3 lakhs minus 2 lakhs, that is 1 lakh.
डन. सो वेरी सिंपल कैलकुलेशन. जस्ट एक स्टार्ट होना इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन सा इंफॉर्मेशन यूज करके स्टार्ट करना है. वंस यू स्टार्ट दिस विल बी द कैलकुलेशन. 4 to 5 मार्क्स वेटेज रहेगा. 4 मार्क्स. डन. चलिए एक और एग्जांपल डिस्कस करना. अभी तो कितना है, पौने पाँच बजे तक लेना है ना हमें. नहीं 4:45. एक और एग्जांपल करते हैं. एक्चुअली और 3 क्वेश्चन कंप्लीट करना था मुझे. चलिए ये एक ही क्वेश्चन करते हैं आपके लिए. डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इज 2. इंटरेस्ट इज 1 lakh. प्रेफरेंस डिविडेंड 15,000. tax rate is 50%. By what percentage will there be fall in EPS if EBIT drops to 1,30,000? Interesting question है. Will you try or should we discuss? Try it. अच्छा, रिलेशन किसका पूछा है? EBIT का रिलेशन किस पे पूछा है? EPS पे ना. EBIT ड्रॉप्स टू पर्टिकुलर लेवल तो EPS कितने परसेंटेज से ड्रॉप होगा. तो EBIT का रिलेशन EPS पे कौन मेजर करेगा? फाइनेंशियल लेवरेज विच इज बीन गिवन टू यू, राइट. कैलकुलेट दैट. रीड द क्वेश्चन thoroughly and then answer. एक सेकंड. Any answer? Percentage fall in EPS. EPS कितने परसेंटेज से फॉल होगा अगर EBIT 1,30,000 पे ड्रॉप हो रहा है? It is dropping to 1,30,000. 50% EPS fall. 100%. It is correct. 100% if you are getting, then it is correct. EBIT 50% से फॉल होगा, बराबर ना. This is what you calculated. ये देखिए, जस्ट लुक, फाइनेंशियल लेवरेज कितना दिया है? 2. इसका इंप्लीकेशन क्या है? अगर EBIT 1% से फॉल होगा तो EPS 2% से फॉल होगा, राइट. अब आपको क्या दिया है? EBIT का एक पर्टिकुलर लेवल था, सपोज X. नाउ फ्रॉम दिस इट हैज फॉल टू 1,30,000. तो मुझे पहले ये परसेंटेज फॉल कितना है वो कैलकुलेट करना होगा. एंड फॉर दैट आई शुड बी कैलकुलेटिंग एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ EBIT. ओके, सपोजिंग एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ EBIT के बेसिस पे से इट इज कमिंग टू 40%. सपोज हाइपोथेटिकल नंबर ले रहा हूं. एग्जिस्टिंग लेवल से अगर EBIT 130 जो जा रहा है नीचे, वो 40% से फॉल हो रहा होता, तो EPS कितने परसेंटेज से फॉल होता? 80%. तो सिंपली आई नीड टू कैलकुलेट एग्जिस्टिंग लेवल पे EBIT कितना होगा. एंड फॉर दैट फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट. अब फाइनेंशियल लेवरेज दिया है, इंटरेस्ट दिया है, प्रेफरेंस डिविडेंड दिया है ना, दिया हुआ है, एंड टैक्स रेट भी दिया हुआ है. तो ओनली मिसिंग विल बी EBIT. So first working I have to calculate EBIT, then I can calculate this percentage fall, and then
Based on the financial leverage, I can calculate percentage fall in EPS, which you have calculated 100% is correct, right? So can we calculate? 12th question. First, we can just write given information, financial leverage 2, interest 1 lakh, preference dividend, हाँ EBIT, हाँ EBIT 50 से फॉल हो रहा है क्योंकि एग्जिस्टिंग EBIT 2,60,000 आ रहा है. So 260 से 130 अगर आ रहा है means it is 50% fall. That is what we need to calculate. So interest 1 lakh, tax rate 50%. Just I am writing given information. So first working what we are calculating is existing EBIT. $15,000 divided by 0.50 will be 30,000. So minus 1 lakh minus 30,000, 1,30,000. तो ये जब लेफ्ट में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा. So this will be 2x minus 2,60,000 is equal to x. तो ये x लेफ्ट में आएगा तो माइनस होगा. So x is equal to 2,60,000. Means EBIT जो है 2,60,000. Completed till here. Second working, calculation of percent fall in EPS. Directly EPS calculation कर सकते हैं. EBIT will be the working only in it. Percentage fall. Serial number, particular amount. Serial number A, financial leverage 2. Serial number B, percentage fall in EBIT. Now this will show in working. Existing EBIT कितना था 2,60,000 and new EBIT कितना है 1,30,000 जो दिया हुआ है. 260 हमने कैलकुलेट किया है. It drops to 130, right? From existing level कितना था 2,60,000 into 100. मतलब कितने अमाउंट से EBIT नीचे गया है 1,30,000 से, बराबर ना. Existing 260 था, it came down to 1,30,000. So how much is the amount fall? 130 from the base. So 1,30,000 divided by 2,60,000 into 100. So percentage fall in EBIT is 50%. Therefore, percentage fall in EPS A into B 100%. कंफ्यूजन होगा कब डिवाइड करना है कब मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए रफ में आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यू कैन जस्ट राइट रिलेशन EBIT EPS. EBIT जब चेंज हो रहा है 1% से, EPS चेंज होगा 2% से, तो EBIT चेंज हो रहा है 50%. तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई. Done. Remaining part we will be continuing tomorrow. So tomorrow some important concepts we have to discuss after solving some examples. So tomorrow more interesting questions we have to solve. मैंने लेवरेज के नोट्स ऑलरेडी ग्रुप में टेलीग्राम चैनल पे शेयर करा हुआ है. ओके,
ग्रुप 1 एंड टीम ईपीए पे शेयर किया हुआ है. सो यू कैन रेफर द एग्जांपल्स एंड जो एग्जांपल्स हमने कंप्लीट किया हुआ है यू कैन जस्ट गो थ्रू, ओके, सो दैट एग्जांपल्स में अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क फॉर. ओके, टुमारोज टाइमिंग completed. First of all, tomorrow Mohit sir is not going to take, so from 8 to 12 Swaroop sir will be taking costing. 12:15 sorry, बीच में ब्रेक रहेगा वो आपके हिसाब से देख लो. 12:15 to 2 lunch break. Tomorrow we are having some निवांत जेवा हो जाए, ठीक है. अरे एक फंक्शन है, we have to attend that function, so me and Swaroop sir is not there. No holiday. 2 to 4 will be having FM. 2 to 4 FM and उसके बाद 4:15 से IDT. वो देखेंगे कितना लगेगा. मैं हूँ ना. If I commit, I'll be taking at 1:30 and if I came at 2 o'clock, तो अन्य से आपका टाइम वेस्ट होगा. So 2 to 4 will be having FM. Okay, I'll try to be here as early as possible, but then we'll have one standard time. Okay, so 2 to 4 tomorrow 2 hours will be having FM and very important concept we are going to discuss tomorrow. Okay, chalo, I will conclude for now.